So hello students, welcome back to Kaushal IS. Join करंतु. तो आज जेमती आमे पढ़िबा बेसिक की कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इकोनॉमी. ठीक अच्छे. Yes, everyone join. तो यही जो चैप्टर अच्छी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज इकोनॉमिक सिलेबस इज कंसर्न. जो ओपीएससी रे आमे देखिबा, यूपीएससी रे देखिबा, एई चैप्टर रु बहुत सारा क्वेश्चन आसुची. एवरी ईयर ये चैप्टर रु आसुची और जदी भी एई चैप्टर मेंस रे न आसु बट आरो प्रीलिम्स रे ए चैप्टर वेटेज बहुत ही अधिक अच्छे. तो प्रीलिम्स रे हम देखिबा कि ये जो यूपीएससी खास करके जदी जे माने यूपीएससी पे प्रिपेयर करूछंती तो एई चैप्टर ता तांको पे बहुत इंपोर्टेंट. एवरी ईयर ए चैप्टर रे ये जो बेसिक की कॉन्सेप्ट रे डेफिनेटली चारिटा की पांचटा क्वेश्चंस आसीबो. एंड जदी आपनकर बेसिक की कॉन्सेप्ट जदी इकोनॉमिक्स से जदी क्लियर अछि तो आपन नेक्स्ट जेते भी टॉपिक्स अछि, जेते भी चैप्टर्स अछि, तो बारंबार ये सब कॉन्सेप्ट से चैप्टर से सब्सिक्वेंटली यूज हबो. तो सेति पई मोर एटा ऑब्जेक्टिव थिला कि केमती जो बहुत प्लेयर जो इकोनॉमिक्स से जो प्रॉब्लम होउछि ताकू मु केमती सॉल्व करि पारिबि. तो गोटे इनिशिएटिव एटा बेसिक्स की कॉन्सेप्ट हमें फर्स्ट देखिबा. तापरे बहुत अन्य वीडियोस भी करिछि मोर प्लेलिस्ट रे जाय कि आपन देखि पारिबे इकोनॉमिक्स फॉर ओपीएससी रे. सेठी बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स के बहुत डिटेल्स रे पार्ट पार्ट करि कि मु बुझाई छै. तो सेटा गोटे ऑब्जेक्टिव नै कि जो बहुत जन स्टूडेंट्स माने जो प्रॉब्लम फेस करूछंती इकोनॉमिक्स रे एज फार एज स्टैटिक वाला पार्ट कंसर्न जोटा बहुत फंडामेंटल जो पार्टा कंसर्न अच्छी तो सेटा बहुत भल भाव में पढ़े सेटा प्लीज देखंतु, निज फ्रेंड सहित शेयर करंतु, लाइक करंतु और आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु. तो आई होप कि एवरी स्टूडेंट्स दे हैव जॉइंड. तो 1 मिनट 2 मिनट्स विल स्टार्ट दिस चैप्टर एंड यस. Okay, everyone join. Good evening everyone. Then so first what is the basic jodi economy apne start karo chonti तो you have to understand what is market economy, what is mixed economy system and what is command economy ki non market भी हमें एटा कहि परिबा. तो जेते these are the three major type of economic system existing in the world. को इकोनॉमी टा कोई कंट्री टा मार्केट इकोनॉमी रे ड्राइव होची, को कंट्री टा हमरो कमांड इकोनॉमी रे ड्राइव होची कि नॉन मार्केट इकोनॉमी ड्राइव होची और को कंट्रीज टा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम रे ड्राइव होची. तो आरो डिफरेंस कोन स्टूडेंट देखो जो मार्केट इकोनॉमी रे हमरो देखो ये जो इकोनॉमी रे वी हैव फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. देखो फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जदी हम आसीबा तो इन इकोनॉमी वी हैव फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन था? फर्स्ट लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. ठीक है, दीज आर फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. Basically what land gives you, land will gives you rent, labor will give you wages, capital it will lead to interest paying, enterprise it will lead to profit. So in economy these are four factor of production. If you want to start any business, ठीक है, if you want to make any product, ठीक अच्छे, if you could जदि तुम किसी प्रोडक्ट बनिबा को चाहो तो फॉर एग्जांपल गोटे प्रोडक्ट नेली x, I want to make this product, x is a good. तो what you need at least four thing. You need at least land, तुमको गोटे लैंड दरकार जो तुम फैक्ट्री सेट करिवो, तुमको तापर लेबर दरकार जोटे
जो माने काम करेंगे तुम प्रोडक्ट बनवा इफ यू हैव raised any capital to make your factory, you have to pay interest के capital दरकार आउ enterprise माने business entrepreneur mindset दरकार ताहेले तुम ये चारि फैक्टर प्रोडक्शन देखि एटा प्रोड्यूस करि पारिबा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट जो x गुड्स जेटा एटा हमर प्रोडक्शन होछि एटा केते हाउ मच टू प्रोड्यूस केते प्रोड्यूस करिबा हाउ मच टू प्रोड्यूस ठीक है हाउ व्हेन टू प्रोड्यूस ठीक है हाउ मच टू प्रोड्यूस व्हेन टू प्रोड्यूस एंड व्हाट टू प्रोड्यूस this and how to distribute these are the four common question if you made a goods no doubt तो हमें जदि गोटे गुड बनाई देलो no doubt but हमें देखिबा जदि कि केते प्रोडक्शन करिबार अछि से गुड रो हाउ मच वी हैव टू प्रोड्यूस कोन प्रोड्यूस करिबा एंड व्हाट टू प्रोड्यूस सॉरी व्हेन केबे प्रोड्यूस करिबा एंड व्हाट टू प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करना होगा हमें एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट जदि जोटा हमें प्रोडक्ट जो बनाइलो ताको हमें मार्केट केमती डिस्ट्रीब्यूशन करिबा। तो दीज आर द फोर मेजर डिसीजन यू हैव टू टेक एज एन एंटरप्रेन्योर कि आमे प्रोडक्ट को केमती केते प्रोड्यूस करिबा केबे प्रोड्यूस करिबा एंड कोटा प्रोडक्ट जिनसटा प्रोड्यूस करिबा एंड केमती ताको डिस्ट्रीब्यूशन करिबा। व्हेन ऑल दिस डिसीजंस ठीक है व्हेन ऑल दिस डिसीजन जेंति हाउ व्हेन व्हाट when all these decisions they are taken by private entity or when they are taken by market then we say that that economy is following which economy that economy is following market economy तार जो economy रो जो model रहइबा ताको हमें कहबो it is nothing but market economy माने market economy रे government will not interfere in any of your decision को भी decision तो government interfere करिबोनी just like a purely capitalist market। तो मार्केट इकोनॉमी को हमें कैपिटलिस्ट मार्केट भी कहि पारिबा जोठी जो प्रोडक्शन रो जो डिसीजन केबे करिबा को प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करिबा केते करिबा एंड ताको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल केमती आनिबा सेठी एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय प्राइवेट और मार्केट तो ताको हमें कहबो दिस इज अ मार्केट इकोनॉमी। व्हेन द सेम थिंग व्हेन द सेम क्वेश्चन इफ इट कम्स कि व्हेन दिस ऑल बीन डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ताको हमें कहबा इट इज नॉन मार्केट इकोनॉमी सिंपल। जदि गवर्नमेंट डिसाइड करिवो कि को केते प्रोड्यूस करिवार अछि केबे प्रोड्यूस करिबा अछि एंड व्हाट टू प्रोड्यूस करिबा अछि प्लस डिस्ट्रीब्यूशन भी जदि गवर्नमेंट ता अंडर नेबो तो हमें कहबा इट इज नॉन मार्केट इकोनॉमी मारे इट नॉन मार्केट रे प्राइवेट रो किछि रोल नथिबो। कम्युनिज्म जेमति चाइना रे हमें देखिबा चाइना रे ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टीज दे आर ओन्ड बाय कम्युनिटी सेठी कार प्राइवेट बोली तो किछि नाही एंड मार्केट इकोनॉमी गोटे कंपेयर करि परबे इट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जोठी ओनली द मार्केट प्लेयर्स और द प्राइवेट प्लेयर्स दे डिटरमाइन व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट फैशन दे विल बी प्रोड्यूसिंग एवरी डिसीजन दे आर टेकन बाय प्राइवेट और मार्केट। In market economy you will see there is no interference of the government but in the non market economy all the decisions are made by government. The private player has no role or you can say limited role in non market economy and its combination when we go about this combination of what market economy and non market economy it will lead to what it will lead to another kind of economy that is mixed economy that is nothing but India follows a socialist kind of economy ठीक है mixed economy or you can say it is socialist we can say socialist economy as in case of India. So I hope this is clear students till now it is clear. Coming to the slide slide so this is something what I have taught it has been represented in this slide. तो मार्केट इकोनॉमी देखि पारिबा इट इज ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर और मार्केट फ्रीडम टू स्टार्ट बिजनेस एंड दिस मार्केट इट डिपेंड्स ऑन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ योर द प्रोडक्ट्स गेटिंग माय पॉइंट। तो जेते भी मार्केट इकोनॉमी में जोटा भी रोल थिबो सेटा प्राइवेट प्लेयर माने नेबे तारे से ओन भी सही करिवे ऑपरेट भी सही करिवे डिसीजन भी तांको रहइबो फ्रीडम बहुत थाए बिजनेस करिवारो एंड एवरीथिंग दैट डिमांड्स कि कोन प्रोड्यूस करिबा इट ऑल डिमांड्स ऑन द सप्लाई एंड डिमांड। जदी प्राइवेट जोता मार्केट इकोनॉमी जो गुड्स रो बहुत ही necessity मतलब this market economy is driven by purchasing power of the customer जदि कस्टमर को ए जिनसटा भलो लागुचे से किनी पारिबो तो सेही गुड्स ऊपर सेही मार्केट रे मार्केट इकोनॉमी सेही गुड्स रो ही प्रोडक्शन हबो भले सेटा एसेंशियल थाउ कि न थाउ। वन पॉइंट टू बी नोटेड मार्केट इकोनॉमी डजंट बॉदर अबाउट द एसेंशियल गुड्स
जदि सपोज कोरोना टाइम वैक्सीन गोटे एसेंशियल हो गला बट दे डू नॉट कंसीडर अबाउट द नेसेसिटी आइटम दे कंसीडर हाउ टू ड्राइव प्रॉफिट सो जदि लोक मैंने किनी पारिबे तांको इकोनॉमी रे सेही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करिवे ना कि एसेंशियल जोटा लोक मैंने किनी पारिबेनी से माने गुड्स टा प्रोड्यूस करिवेनी एंड दीज आर ऑल ड्रिवन बाय प्राइवेट एंटिटी तापर हमें आसीबो कमांड इकोनॉमी की नॉन मार्केट इकोनॉमी दीज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट दीज आर गवर्नमेंट अंडर रेगुलेशन दे हैव प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म जेमती आर जिते भी डिसीजन कौन प्रोड्यूस करबा छी केते प्रोड्यूस करबा छी ऑपरेशन कॉस्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन रहइबो एंड इट इज सबु रे प्राइस कंट्रोल रहइबो जेमती इति मैक्सिमम एमआरपी जो रेगुलेट किया करबो गवर्नमेंट करबो बट मार्केट इकोनॉमी रे देयर इज नो सच प्राइस कंट्रोल व्हाटएवर द प्राइस हैज बीन डिसाइडेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द गुड जिते डिमांड रहइबो प्राइवेट मार्केट से तारो कॉस्ट बढ़ी देबो बट इन द केस ऑफ कमांड इकोनॉमी इन द केस ऑफ नॉन मार्केट इकोनॉमी देयर इज हैज बीन प्राइस कंट्रोल एज इन we can see in the India there is for essential drugs or for essential item the government has put a ceiling limit कि एक price रे बेसी नहीं पारिबो that is MRP and our combination that is mixed economy system where both private and government they can form a symbiotic relationship we can say they can form a company which is common in India ठीक अछि which is common in India in the form of PPP, public-private partnership model, where both government and private sector they coexist, है ना? Government और private sector दीटा मिसिकी they coexist करे, दिना आदिता मिसिकी से माने किसी start करी पारिबे. That is very important model. That is public, है ना? Private-public enterprise or private-public partnership. So this model is common in India, where we want the participation of private player as investor. We want the participation of private player as अपन को technology for new skill and for employment. So we need desperately the investment of the private sector led industries for attracting investment, for attracting skill, for attracting technology. ठीक अच्छे तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली चाहिए कि आमे मिसिकी ना गवर्नमेंट और प्राइवेट मिसिकी ना गोटे कंपनी वेंचर स्टार्ट करिबा काहे कि ऑब्वियसली रिस्क शेयरिंग भी डिवाइड हे जिवो जदि गवर्नमेंट ही पूरा रूल करिब गवर्नमेंट ही पूरा रन करिब तो एमती देखा जाउछ स्टूडेंट्स जो माने गवर्नमेंट जॉब करू छंती से माने रिस्क नो नांती से माने बेसी काम करिबेनी काहे कि तांको तो मासक मास सैलरी मिली जिवो बट ये पीपीपी मॉडल रे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या कि पीयूसी मॉडल रे तो टिके तांकर अकाउंटेबिलिटी थाए से माने काम भी करिवे टिके रिस्क भी नेबे न्यू टेक्नोलॉजी आसीबो स्किल आसीबो इन्वेस्टमेंट आसीबो जदि एई प्रकार जदि इकोनॉमिक कोलैबोरेशन होछि बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटिटी सेटा हम को इकोनॉमिक सिस्टम कहबो सेटा हम कहबो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम आई होप इज इट क्लियर नाउ बुझाउ छै ओडिशा ओडिया लिटिल लवर कुणाल एसके कुणाल then coming to new slides जमती मुझे डिस्कस कली व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर एंटरप्राइज एंड कैपिटल व्हाटएवर यू वांट टू प्रोड्यूस इन द मार्केट यू नीड दिस फोर these are the four basic what things are required so that's why we say it as a factor of production यदि ए भीतर यदि किछि भी न रहइबो तो you cannot produce any goods and services in the market so these are basically the factors of production then we comes to the next topic that is type major sectors of an economy yes major sectors of an economy तो एबे इज जो हम देखिबा there are primarily three sectors which we are common in the newspaper or you can say in the daily life we can see these three sectors but there is approximately 5 economic sectors the first chapter will deal with what are those the first sector which is very important is primary sector secondary sector then tertiary sector तापरे quaternary sector and the last sector गोटे आउ sector अछि that is ताको हमें कहूछु क्यूनरी sector ठीक अछि तो बेसिकली वी नीड टू स्टडी 5 सेक्टर एज फार एज यूपीएससी एंड ओपीएससी कंसर्न ई पांचटा सेक्टर रो कोन हमकु पढिबार अछि आर एग्जांपल बेसी पचारे ठीक अछि तो प्राइमरी सेक्टर स्टूडेंट्स कोन दिस सेक्टर मतलब those economic activity which deals directly with the extraction of raw material ठीक अछि जोति हमें डील जोटा इकोनॉमिक सिस्टम रे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रे डायरेक्टली हम रॉ मटेरियल रे एक्सट्रैक्ट करबा ताको यूज करबा तो सेही सेक्टर को हमें कहबू इट इज अ प्राइमरी सेक्टर फॉर एग्जांपल इटा दे पारेबा हम एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री
माइनिंग। तो these are what, these are primary sector। एठी हमें कोन किछि तो टूल हमें यूज करू डायरेक्टली हमें रॉ मटेरियल सहित डील करूछु, डायरेक्टली हमें रॉ मटेरियल सहित इनपुट जोटा इनपुट अछि डायरेक्टली रॉ मटेरियल यूज करके हम किछि प्रोडक्शन करूछु। तो जोटा पूरा रॉ जिंसोटा रॉ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट विल कम अंडर प्राइमरी सेक्टर। तापरे सेकेंडरी सेक्टर कोन, इट इज जस्ट द अपर वर्जन दैट इज कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। ठीक अच्छे। तो जिते भी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जोटी हमें टिके टूल यूज करू, मशीन्स यूज करू कि कैपिटल गुड्स हमें यूज करू, तो सही जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को सेक्टर आसी जो स्टूडेंट्स सही सब इकोनॉमिक एक्टिविटी सेकेंडरी सेक्टर रे आसी जिवो। तापर टर्सरी सेक्टर इट इज आल्सो नोन एज सर्विसेज सेक्टर। तो कौन कौन सर्विसेज सही पारिबो, तो व्हाट ऑल कम्स इन द सर्विस, जेमती एजुकेशन इज अ सर्विस, हॉस्पिटैलिटी इज अ सर्विस कि ताको हमें टूरिज्म कहि पारिबा, टूरिज्म। तापर रेलवे या ट्रांसपोर्टेशन इज अ सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन इज अ सर्विस। तो दिस ऑल विल कम अंडर सर्विस सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। प्राइमरी सेक्टर रे सेही सब इकोनॉमिक एक्टिविटी आसीबो जोटी हमें डायरेक्टली डील करूछु रॉ मटेरियल थ्रू, जेमती फॉरेस्ट्री हैला, फिशिंग हैला, एग्रीकल्चर हैला। सेकेंडरी सेक्टर रे हमें आसीबा यूज ऑफ मशीन्स, यूज ऑफ टूल्स, जेमते कंस्ट्रक्शन साइट रे, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स रे, से सब एक्टिविटी सेकेंडरी सेक्टर रे आसी जिवो। टर्सरी सेक्टर रे ऑल सर्विस सेक्टर जते भी अछि सेटा टर्सरी सेक्टर रे आसी जिवो। तापरे क्वाटरनरी सेक्टर रे हमें देखिबा ऑल रिसर्च एंड डेवलपमेंट जते भी आर&डी कि साइंटिस्ट गुडा तांकर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से को सेक्टर रे पसिबो से क्वाटरनरी सेक्टर रे आसीबो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड। ठीक अछि, जेमते पीएचडी स्टूडेंट्स हेले, साइंटिस्ट हेले, दैट विल ऑल कम अंडर क्वाटरनरी सेक्टर। तापर जेमते लास्ट गोटे सेक्टर थिला जेटा क्यूनरी सेक्टर। क्यूनरी सेक्टर एट स्टूडेंट्स की आसीबे, एट आसीबे को नहीं क्यूनरी सेक्टर्स रे आसीबे सीईओ, कंपनी रो सीईओ, कंपनी रो सीटीओ, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो दिस जो डिसीजन मेकर्स जो डिसीजन मेकर्स होचंती गोटे बिजनेस रे, जेमति सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एचआर, तो जो भी डिसीजन मेकर होचंती दैट विल कम अंडर क्यूनरी सेक्टर। ठीक अच्छे। तो यही सब एग्जांपल रिलेटेड क्वेश्चंस आसुची यूपीएससी रे कि कंस्ट्रक्शन को सेक्टर आसुची, दिस रेलवे or this telecommunication falls under this sector। So you have to understand about this 5 sector and the questions which will be coming, केमती questions आसीबो सेटा example सहित आसीबो। ठीक अछि, is it clear? Please give a thumbs up if it is clear। Yes। ठीक, then we'll come to these are the sectors of economy, है ना। primary sector, what are the examples you can find in primary sector? The fishing, farming and mining। So you don't need any tool or you don't need any machine to do this, you know, to take this economic activity। कहीं agriculture रे, yes, जब अबे तो मैं कोई सर farming में we can use machines such as tractor and all, but primarily this economic activity, this farming, mining and fishing जेटा हमें जिबा बहुत आगो टाइम रे, तो we don't have tractors ना, we have only just plow, the farmer plow। तो these are activity that comes under primary activity in which you don't need any technology, you don't need any capital goods। What are capital goods? I have repeated that capital goods, these are those machines or these are those goods which help in the production of your final goods। secondary sector रे कोन आसियो, मैन्युफैक्चरिंग, जेमति कार फैक्ट्री हैला, ब्रूअरी हैला, फ्लोर मिल हैला। तो दिस ऑल इंडस्ट्रीज जिते भी फैक्ट्रीज गुडा आसुची, जिते भी इंडस्ट्रीज गुडा आसुची, सीमेंट इंडस्ट्रीज हैला, इलेक्ट्रिसिटी, these all will come under manufacturing sector। service sector जेमति मैं कहली, banking is a service, education is a service, restaurant की tourism। so this all telecommunication जेमति Jio, Airtel, this all will come under tertiary sector। this is the service sector। तापर quaternary and quinary मोटी बतै देथिली। ओपीएससी केमति क्वेश्चन पचारती स्टूडेंट्स, ओपीएससी फर्स्ट क्वेश्चन पचारियो तुमको, जते भी आमे सेक्टर पढिलु, 4-5 सेक्टर पढिलु। सो विच सेक्टर गिव्स लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय विच ऑफ द सेक्टर, कमेंट करी कहि परिबे। विच सेक्टर, विच इन द 5 सेक्टर में पढिलु, गोटे आमे दे देउ छुटी क्यूनरी सेक्टर थिला, यस क्यूनरी सेक्टर। तो ये जो 5टा सेक्टर भीतर विच सेक्टर
generates largest number of employment, largest employment को सेक्टर टा सबुटु बेसी employment generate करूची? Can you please comment? Service sector किए तो भोजी service sector largest number of employment. Which of the following generate largest number of employment? No, all are saying service sector. Service sector. No. तो employment जदि हमें देखिए सब तो बेसी जे employment raise करूची, if we say the largest number of employment is raised by the primary sector, ठीक अच्छे. Obviously agriculture तो बेसी थोड़ी employment के generate करूची. As you know that still India जमते India रो population 60% population that depend on agriculture itself. तो सब तो बेसी जो job generate करूची से agriculture. देखो now you will say sir एमती service sector job generate करूँ, but most of the service sector job these are अंडरपेड कहि परिबा. एग्रीकल्चर इज आल्सो अंडरपेड. जदि हमें देखिबा तो बहुत अंडरपेड माने जति कि लोक को दरकार नहीं जॉब, बट सेति कि बेसी लोक माने एग्रीकल्चर रे जॉब करूछंती. सेटा हमें पढिबा व्हिच काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट यू हैव स्टडी, और यू कैन मार्क दिस, यू कैन मेक इट अ नोट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. जते भी हमर एग्रीकल्चर सेक्टर रे सबुटु बेसी जो फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम देखिबा को पाउछु सेटा का डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. कारण देखो जदि गोटे घरे रे 1 एकड़ जदि एग्रीकल्चर लैंड था तो 1 एकड़ जदि प्रोडक्शन करबे आपको हमको 4 लोक मानू दरकार. बट इंडियन कंटेक्स्ट देखिबा रूरल रे कि पूरा फैमिली सतो तारो फैमिली रे 10 मेंबर अछंती, पूरा 10 जन ही जाय कि सेठी एग्रीकल्चर रे कि खेती बाड़ी करिवे. बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड. वी रिक्वायर ओनली 4 मेंबर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इन 1 एकड़ लैंड. बट तांको पूरा फैमिली पळेबे व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड. तो सेही तो जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेस करी ताको हम कहबो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. एनी हाउ primary sector generates large number of employment. एटा मन रखिबो. then next question से पचारछि जदि हमें जीडीपी रे देखिबा, इंडिया रे जदि जीडीपी देखिबा, which sector contributes maximum in GDP of India? एटा कमेंट करो. which sector contribute maximum GDP of India? को सेक्टर ता सबटु मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करूछि जीडीपी? सर्विस सेक्टर मनी. तो एटी यस. तो जदि हमें जीडीपी रे जदि मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूट करूची से होची तो हम टर्शियरी सेक्टर के सर्विस सेक्टर. तो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 50% ऑफ द टोटल जीडीपी कंट्रीब्यूशन इज डन बाय टर्शियरी सेक्टर. सर्विस सेक्टर सबुटु बेसी से जीडीपी जनरेट करूची, मतलब सबुटु बेसी कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर रो. बट सबुटु बेसी जो एम्प्लॉयमेंट जो रेस करबार पोटेंशियल सेटा प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर रो. ठीक अछि. तो इन दिस वे द क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड इन योर ओपीएससी एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन. Moving to next part, this is a very important topic जो यूपीएससी रे पचार थिला. What is fixed capital and working capital मझिरे हम डिफरेंस टा देखिबा. ठीक अछि. तो as stated in this slide, what are fixed capital students? Fixed capital is the capital that is used for buying fixed asset that are used for a long period of time for the business. Working capital, it is the capital that is used to carry out day to day business activity. तो fixed capital students जोटा मतलब कहि पारिबा ओडिया रे कोन को पूंजी या फिर हिंदी रे भी पूंजी कहउछंती, जोटा जो तुम पूंजी लगैलो बड़ अमाउंट लगैलो दैट इज गोइंग टू बेनिफिट योर बिजनेस फॉर अ लॉन्गर टर्म. कि कुछ इन्वेस्टमेंट करिलो इन सर्टेन फिजिकल एसेट. फॉर एग्जांपल इफ यू आर रनिंग एन इंडस्ट्री which requires a printing machine. Suppose you are running a printing shop, so you need a printing machine. Suppose you have invested that money on buying a printing machine, that will come under your fixed capital. सेटा जो प्रिंटिंग मशीन नेलो सेटा तो गोटे 2 दिन तो पुनी पैसा लागिबे ना. इट विल गिव यू द बेनिफिट कैन बी रिप्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सेटा बहुत समय पई चलिबो. बट वर्किंग कैपिटल कोन जो डे टू डे जो बिजनेस चलीबार जो खर्चा होउची, सपोज द प्रिंटिंग शॉप जदि तमरो अछि एंड द प्रिंटिंग मशीन जो पैसा तुम प्रिंटिंग मशीन पई लगेलो सेटा दैट विल कम द फिक्स्ड कैपिटल. एंड जो कलर जो यूज करूछो प्रिंटिंग जदि से मशीन जो कलर यूज कर डे टू डे यूज हो. सपोज गोटे ब्लैक कलर है ना सेटा सरी जाय छी देन यू हैव टू बाय अगेन. तो जदि से कलर किनिबार जो तुम टंका लागिला कैपिटल लागिला ताको हम कहबो वर्किंग कैपिटल. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि फिक्स्ड कैपिटल is this capital that utilized in buying of asset and this is used for long duration, whereas working capital day to day रे जो खर्चा होउची बिजनेस रे ताको हमें वर्किंग कैपिटल रे करिबा. ठीक अछि. तो ता हिसाब रे गोटे यूपीएससी बहुत बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम करथिला. तमे को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 8 रे
कोटा कोटा पेयर ठीक है जदि मु पेयर नंबर कर दउचे for example this is pair 1, this is pair 2, this is pair 3 and this is pair 4. please comment को pair रे मैच जो मैच द फॉलोइंग को पेयर टा करेक्ट होचे व्हिच पेयर्स दे आर करेक्टली मैच जेमती पेट्रोल से लेखि छि वर्किंग कैपिटल फार्मर्स प्लाउ लेखि छि फिक्स कैपिटल कंप्यूटर लेखि छि वर्किंग कैपिटल या न्यूज़ बाय व्यूअर लेखि छि फिक्स कैपिटल तो को पेयर टा 1 2 3 4 कमेंट करो को पेयर टा ठीक अच्छे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द करेक्ट पेयर 1 2 3 4 भितर मोर देन वन पेयर कैन बी राइट ठीक अच्छे मोर देन वन केते पेयर टा टोटल क्या इन ये जो भितर केते पेयर टा अच्छे कमेंट करो अच्छा रेशमी भी जॉइन करी छी वाह वर्षा बेहरा प्रियंका कुणाल 1 and 3 victory everywhere 1 and 3 1 and 3 only Resmi only 2 okay Priyanka 1 and 3 1 and 3 चल देखिए देखो पेट्रोल will come under working capital yes petrol will come under daily जदि तमे पेट्रोल तो डेली यूज करिवो ना थोड़े जदि पेट्रोल रखि देले पूरा जीवन 5 वर्ष जाय थोड़ी चलिबो तो पेट्रोल इज यस वर्किंग कैपिटल जेमति इफ यू कम्यूट टू योर ऑफिस जदि तमे ऑफिस को जाउ छो गाड़ी रे तो यू नीड पेट्रोल एवरी डे तो दैट और जदि तमे ऑफिसर बनी जीवो तो द पेट्रोल कॉस्ट विल कम अंडर रिकरिंग कॉस्ट डेली तुमको पेट्रोल दरकार ना कि थोड़े नहीं गलो तुम 5 वर्ष चलेबो तो पेट्रोल it is working capital yes it is correct one this pair has been completely matched correctly farmers plow it is fixed capital yes this is also correct farmer plow कुल्हाड़ी तो फार्मर जदि थोड़े कुल्हाड़ी से जदि किनिला प्लाव फावड़ा किनिला तो ताकू तो वर्ष वर्ष से यूज करि पारिबो ना ताकू फार्मर को थोड़ी डेली प्लाव दरकार से तो थोड़े जदि फार्मर गोटे प्लाव किनि देला त 2 वर्ष 3 वर्ष से चलिबो तो फार्मर प्लाव इट इज फिक्स्ड कैपिटल तो 1 सेकंड इज आल्सो करेक्ट 1 भी करेक्ट सेकंड भी करेक्ट computer is a working capital ना working capital कोड थिला working capital these are those capital which are used in day to day basis जदि तुम कंप्यूटर थोड़े किनी देलो it is used for longer period of time तो it is not correct third is not correct working capital माने कौन डे टू डे ऑपरेशन रे माने अच्छा you might be confused कि डे टू डे ऑपरेशन रे यूज हो कि ना थोड़े पैसा देखिबा फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल तमें जदि पैसा लगौछ किछि एसेट किनिया पई जोटा लंबा समय तक चलिबो सेटा को हमें कहबो फिक्स कैपिटल जदि तमर पैसा किछि लागि छि एंड इट इज फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन फॉर डे टू डे एक्टिविटी जदि तमर पैसा लागु छि ताकू हमें वर्किंग कैपिटल कहबा तो डे टू डे डेली थोड़ी तमर पैसा लागिबो कंप्यूटर किनिबा को थोड़े गोटे कंप्यूटर किनि दलो इट विल कम अंडर फिक्स एसेट एटा तो गोटे एसेट हैला टेंजिबल एसेट फार्मर प्लाव भी गोटे एसेट हैला पेट्रोल थोड़ी एसेट होछि डेली भरिया पड़िबो ताकू yarn used by weaver जो फैब्रिक it is also not an asset तुमको जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेली यू नीड फैब्रिक डेली यू हैव टू स्पेंड ऑन योर फैब्रिक तो इट इज नॉट अ फिक्स कैपिटल तो फोर्थ भी रहिबनी तो आंसर विल बी 1 and 2 these are 2 माने जदि तमे पैसा लगौछ किछि फिजिकल एसेट किनिबा कय जोटा लॉन्ग ड्यूरेशन पय इट विल वर्क दैट कैपिटल इज नोन एज फिक्स कैपिटल किछि एसेट किनिलो एंड जदि तमरो कैपिटल लागु छि टू जस्ट रन योर बिजनेस ऑन डेली बेसिस रे गोटे काम पय तमरो जदि पैसा खर्च होछि दैट विल कम अंडर वर्किंग कैपिटल तो इन दिस petrol is working capital farmer per thode kinla it is fixed capital computer is an also asset it will come under fixed capital it is not working capital yarn jo fabric it is also working capital not fixed capital because yarn fabric every day tomorrow cloth banibo every day you require yarn every day you require fabrics ठीक है that will the paisa tomar jota kharcho hobo that will come under working capital hope it is clear yes 1 and 2
Okay, so coming to next part, what is law of demand? So we will read about law of demand. So law of demand कौन कहूचे? When the price of law of demand कहूचे, it is again it is on one important topic. Please listen carefully. Law of demand states that when the price of any goods or services goes up, the quantity demanded will go down. Simple ना? कोई भी जदि जिनिस रो, कोई भी जदि प्रोडक्ट रो, any product, if any product जदि तारो प्राइस बढ़िला, जदि आरो प्राइस बढ़िला, तो आरो जो डिमांड अच्छे मार्केट रे, डिमांड ऑब्वियसली से फॉल हो जाबो, दैट इज अ नॉर्मल. ठीक है, जदि इफ एनी मतलब आइटम और गुड्स और सर्विसेज द प्राइस इंक्रीजेस, द डिमांड डिक्रीजेस. एटा मन रखिबो लॉ ऑफ डिमांड. ठीक अछि, दिस स्टेट ए रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, एंड द प्राइस एंड डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड. जदि से गुड्स रो प्राइस बढ़िला तारो डिमांड टा घटिबो, जदि से को गुड्स रो जदि प्राइस घटिला तो तारो डिमांड टा बढ़िबो. तो प्राइस एंड डिमांड दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. दिस इज वेरी सिंपल कांसेप्ट. किसी जिनिस रो जदि प्राइस बढ़िला, ऑब्वियसली यू विल नॉट बाय, एंड द ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट विल रिड्यूस. सिमिलरली बट लॉ ऑफ सप्लाई तारो टिके उल्टा अछि. लॉ ऑफ सप्लाई हम देखिबा. लॉ ऑफ सप्लाई कोन कहूची, जदि किछि प्रोडक्ट रो, जदि किछि प्रोडक्ट रो फॉर एग्जांपल तारो प्राइस बढ़िला, तो तारो सप्लाई रे केमती इंपैक्ट होबो, तो सप्लाई भी बढ़िबो. तो दिस लॉ ऑफ सप्लाई इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ दैट गुड, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक अछि, व्हेनेवर यू फाइंड कि जदि किछि गुड्स रो जदि प्राइस बढ़िला, तो तारो टेंडेमली जो मैन्युफैक्चरर से सप्लाई भी बढ़ी देबो टू अर्न मोर प्रॉफिट. ठीक अछि, तो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कोन देखिलु हमें? लॉ ऑफ डिमांड देखिलु प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड. जदि किछि जिंस रो प्राइस बढ़िबो तारो डिमांड टा फॉल हेबो. बट लॉ ऑफ सप्लाई कहूची जदि किछि जिंस रो प्राइस बढ़िला, जदि किछि को भी जिंस रो जदि प्राइस बढ़िला, तो तारो सप्लाई टा ऑटोमेटिक बढ़िबो. ठीक अछि, तो इन लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट द प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई. प्राइस बढ़िला, सप्लाई बढ़िला. प्राइस किछि गुड्स रो घटिला तो सप्लाई भी घटी जिवो. बिकॉज when the price of any commodity rises, the manufacturer thinks कि जदि मु बेसी ताको प्रोड्यूस करिबे, बेसी मार्केट सप्लाई करिबे, तो डेफिनेटली मु बेसी पैसा टा अर्न करि पारिबे. तो लॉ ऑफ सप्लाई यू थिंक इन द पर्सपेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरर. ठीक अछि, लॉ ऑफ सप्लाई यू थिंक इन द पर्सपेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरर, वेयर एज लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड तमे आकु थिंक करिवो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर. बुझिलो, law of demand you think from the perspective of consumer, and law of supply you have to think from the perspective of manufacturer. ठीक अछि, जदि एटा मन रखिबो तो you don't have any problem in this law of demand and law of supply. ठीक है, on the basis of this, on the basis of this we need to read about some of the important goods. ठीक अछि, तापर गोटे यूपीएससी क्वेश्चन लास्ट रे करबा. तो जदि कंज्यूम बेसिस देखो गोटे होचे हमर नॉर्मल गुड्स. ठीक अछि, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स, ए डीटा जो हमर अछि टिके ताको देखिबा. नॉर्मल गुड्स तमर जेते भी तमर नॉर्मल गुड्स जेमति बेंच हैला, टैक्स हैला, जोटा डे टू डे बेसिस रे यूज होचे, ताको हमें नॉर्मल गुड्स कहू छु. इंफीरियर गुड्स को स्टूडेंट्स, इंफीरियर गुड्स दिस आर नॉट ब्रांडेड. जदि तमे किछि ब्रांडेड जिंसटा यूज करू छो, इफ यू वेयरिंग ब्रांडेड क्लोथ, सपोज लीवाइस रो पिन्हि छो, पीटर इंग्लैंड जाउ छो, बट इफ यू वेयरिंग द इन नॉन ब्रांडेड गुड्स, दैट विल कम अंडर इंफीरियर गुड्स. ठीक अछि, तापर आसी कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड गिफेन गुड्स. आई विल एक्सप्लेन दिस, आपको बुझा पड़िबो. तो आई होप दिस टू गुड्स, ये दो गुड्स में बेसी किछि नाही, काहे कि नॉर्मल गुड्स यू अंडरस्टैंड द डे टू डे जो गुड्स हमें यूज करू छु लाइफ रे. इंफीरियर गुड्स दीज आर ऑफ नॉट of top notch quality, these are unbranded goods, jota local goods bhi koi pariba inferior goods. Now we need to discuss about this complementary goods and substitute goods. ठीक है, after then we'll see about this raw material. On the basis of industry we categorize goods as raw material and capital goods. तो raw material jota production पे use होचे, final goods बने पे. Capital goods जेमति मु कहली, capital goods these are machines, these are machines which help in the production of final goods. Public good, on the basis of government जदि हमें goods को categorize करियो, तो public good these are the goods which are produced by the government. ठीक अछि, private good you have these are the goods which are produced by the private. माने एठी तमरा कहारो अधिकार नै, समस्त public good हला तमर road is a public good, railway is a public good. ठीक अछि, which nobody can claim that there is that good is there or her.
ठीक है। देन विल कम आउट प्राइवेट गुड। प्राइवेट गुड से कौन है? दिस आर बेसिकली प्राइवेट प्रॉपर्टीज। एटी माने जार अच्छी से ही क्लेम करि पारिबो, नोबडी कैन इंटरफेयर। मिक्स गुड माने अगेन दिस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। जदि किछि आरएसपी जदि मिक्स पीएसयू जदि किछि जदि गुड्स प्रोड्यूस करूछि तो ता गुड्स डिसाइड करिबारो केते प्राइस रखिबारो तार अथॉरिटी दी जन पाखरे रहइबो, दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट गुड पाखरे रहइबो। तो बेसिकली पब्लिक गुड्स दीज आर नथिंग बट दीज आर द those goods or those services which are provided by the government to the public. Private goods, private mixed goods, they have both features of private and public goods. Now in this slide we have to understand these three goods, okay? Complementary goods and substitute goods, these are very important in this slides. So we'll read about one by one, ठीक है? डिटेल आपको पढ़िया पड़िबा। तो फर्स्ट टाइम पढ़िबा सब्स्टिट्यूट गुड आमे पढ़िया, ठीक है? सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक अच्छे। तो सब्स्टिट्यूट गुड एमती केमती आर तार मन रखिबार गोटे एग्जांपल में दो दोची, टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी को हमें कंपेयर करिबा। देखो क्वेश्चन कोन आसुची, जो टी रो सब्स्टिट्यूट होचे कॉफी, कॉफी रो सब्स्टिट्यूट होचे टी। तो जदी टी रो प्राइस बढ़िला, ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, तो तमे कुह कॉफी रो डिमांड कोन हेबो? प्लीज कमेंट। जदी टी रो प्राइस बढ़िला तो कॉफी रो डिमांड कौन हम? कॉफी आर सब्स्टिट्यूट, टी रो सब्स्टिट्यूट होची कॉफी। तो जदी टी रो प्राइस बढ़िला, व्हाट विल बी द इंपैक्ट इन द कॉफी ऑफ डिमांड? ठीक है, डिमांड ऑफ कॉफी, कॉफी रो डिमांड बढ़िबो कि कॉफी रो डिमांड घटिबो? रेशमी इंक्रीजेस, विक्ट्री एवरीवेयर, यस इंक्रीजेस, यस। तो कॉफी रो डिमांड कोन हो? कॉफी रो डिमांड बढ़िबो, बिकॉज जदी टी रो जदी प्राइस बढ़ी गला तो व्हाई विल ड्रिंक टी? लोक माने कोन प्रिफर करबे? लोक माने कॉफी को स्विच हो जिबे, ऑटोमेटिकली से माने कॉफी को स्विच हो जिबे, बिकॉज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल ओवर टी इज व्हाट? कॉफी। तो जेमती प्राइस ऑफ टी बढ़िला तुमरो कॉफी रो डिमांड ऑटोमेटिक मार्केट रे बढ़ी जिवो। तो दिस टू गुड्स दे आर नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक अच्छे। टी होची कॉफी रो सब्स्टिट्यूट, कॉफी होची टी रो। जदि को सब्स्टिट्यूट गुड रो जदि प्राइस बढ़िला तो जो गुड कंसीडर होची तार डिमांड टा ऑपोजिट बढ़ी जिवो। सपोज इफ द प्राइस ऑफ टी राइजेस, द डिमांड ऑफ, एठी देखो डिमांड लिखिছে, द डिमांड ऑफ कॉफी राइजेस, ठीक अच्छे। आई होप इट इज क्लियर। देन होची नेक्स्ट जो फॉर्म ऑफ गुड हमें पढ़बा सेठी होची कॉम्प्लीमेंटरी गुड। कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, ठीक अच्छे। कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, तो कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स कौन होची स्टूडेंट्स? आर एग्जांपल नहीं कि हमें पढ़ेबा टी, सुगर एंड टी, ठीक है, सुगर एंड टी। तो ये क्वेश्चन को पचार से, जदि सुगर रो प्राइस बढ़ियो, जदि प्राइस ऑफ सुगर इफ इट इंक्रीजेस, देन व्हाट विल बी द इंपैक्ट इन द डिमांड ऑफ टी? डिमांड, ठीक अच्छे। जदि सुगर रो प्राइस बढ़िला तो टी रो डिमांड रो केमती इंपैक्ट करबो? टी रो डिमांड बढ़िबो कि घटिबो? यस, तो टी रो डिमांड, यस। तो जदि सुगर रो प्राइस बढ़िला, टी रो डिमांड घटिबो। दीज आर कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। जदि टी सुगर जो जदि प्राइस बढ़ी गला तो लोक माने चा पीबा को छाड़ दे, ठीक अच्छे। अगेन गोटे और एग्जांपल नहीं पारिबा, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर भी होची कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। जदि ब्रेड रो प्राइस बढ़िला, जदि ब्रेड रो प्राइस बढ़िया तो ऑटोमेटिकली बटर रो जो डिमांड होची सेटा फॉल हो, कहीं बटर नहीं कि से माने कौन करिवे? ब्रेड रो जदि पारुटी ताको महंगा पड़ुची, से माने बटर नहीं कि कौन कर, तो बटर रो डिमांड टा पड़ जिवो। तो दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, ठीक है। एंड जेमती हम इंफीरियर गुड्स आमे देखिबा, इंफीरियर गुड्स कौन होची? जेमती मु कहले दिस आर लो क्वालिटी गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स, ठीक अच्छे। तो फॉर एग्जांपल कौन करिया, जदि तुमरो इनकम बढ़ी जाउची, ठीक है, जदि अ पर्सन रो जदि पैसा इनकम बढ़ी जाउची तो जो डिमांड रहिबो, इंफीरियर गुड्स रो जो डिमांड रहिबो सेटा भी घटी जो,
इट इज वेरी अंडरस्टूड जदि पर्सन जदि तुम आज सैलरी अच्छी 20K पर मंथ तुम गोटे नॉन ब्रांडेड चीजटा कि ड्रेसटा पिंधि पार इफ योर इनकम रेजेस बाय 1 लाख तो ऑब्वियसली यू विल डिमांड व्हाट यू विल प्रेफर ब्रांडेड चीजें ब्रांडेड क्लोथ्स यू विल वियर तो whenever the income of individual rises तो जो द डिमांड ऑफ इनफीरियर गुड सेटा ड्रास्टिकली इट विल फॉल तुमरो इनकम बढ़िला तुम आओ इनफीरियर गुड्स टा यूज करिवनी नॉर्मल गुड्स टा यूज करिवनी तुम टिके एक्सपेंसिव गुड्स के जीवो तुम टिके क्वालिटी वाला गुड्स किनिबो तो whenever your income rises the demand of inferior goods के normal goods it will fall automatically. Then we have to read about two more goods that is Veblen goods and Giffen goods. ठीक अच्छे गोटे हूँ Veblen goods and Giffen goods. These two goods have to be remembered or have to be understood in a very different way because why these two goods I have taken in another form of example. आर जो प्रिंसिपल अच्छी सेटा जिते भी आम गुड्स पढ़िलु ना जिते भी नॉर्मल इनफीरियर कॉम्प्लीमेंटरी सब्स्टिट्यूट गुड जिते भी आम गुड्स पढ़ीछु यही दुटा गुड तांको यही दुटा गुड ऑपोजिट से जो गुड देखिबा कोन तो देखो वेबलेन गुड्स कोन अछि एटा कहूछि जदी ए गुड रो वेबलेन गुड रो जदी प्राइस टा बढ़िबो ना जदी प्राइस टा बढ़िबो तो द डिमांड फॉर दिस वेबलेन गुड द डिमांड फॉर दिस वेबलेन गुड विल राइज बोलक ने सुनो एबे जेते भी जे हम गुड्स पढ़ीछु सेटार जदी प्राइस बढ़िला से तारो जो गुड्स डिमांड कोन ऑटोमेटिकली घटिबो बट वेबलेन गुड्स दिस आर दोस गुड्स जदी तारो प्राइस बढ़ी गला से गुड्स जदी प्राइस बढ़ी गला लोक माने आउ ताको डिमांड करिवे फॉर बेस्ट एग्जांपल तमरो जेमती रोलेक्स रो वॉच है ना बेस्ट आईफोन 17 प्रो मैक्स तो देखो आईफोन 17 प्रो मैक्स कोन वेबलेन गुड आसीबो कोनी एवरी ईयर से लॉन्च करूची तारो रेट आउट दिन प्रतिदिन बढ़ू चालुची बट तारो डिमांड भी से हिसाब रे बढ़ी चालुची आर यू एग्री विथ दिस पॉइंट और नॉट आईफोन 17 प्रो मैक्स की कार हैला एसयूवी कार हैला ठीक अछि BMW हैला ऑडी हैला तो तारो जदी रेट बढ़िबो कि रोलेक्स रो वॉच तारो जदी रेट बढ़िबो लोक माने तारो डिमांड ता आउ बढ़ीबे ऑपोजिट ऑफ व्हाटएवर गुड्स वी हैव स्टडीड टिल नाउ तो वेबलेन गुड्स दिस आर लग्जरी गुड्स जेमती तारो रेट बढ़िबो तारो डिमांड ता ऑटोमेटिकली बढ़िबो सिमिलरली गिफेन गुड्स भी सेही प्रिंसिपल फॉलो करूची गिफेन गुड्स भी कहूची यस गिफेन गुड्स भी फॉलो करूची जदी ए सब गुड्स रो भी जदी प्राइस ता बढ़िला तो ए सब गुड्स रो कोन हबो डिमांड ता भी बढ़िबो ठीक अछि गिफेन गुड्स भी सेया कहूची दैट इज व्हाई वेबलेन गुड्स एंड गिफेन गुड्स दीज आर टू गुड्स which do not follow law of these two goods that do not follow law of demand बुझिलो कि लॉ ऑफ डिमांड कौन कहूतिला लॉ ऑफ डिमांड कहूतिला कि जदी किछि गुड्स रो जदी प्राइस बढ़िबो तार डिमांड ता फॉल हेबो बट दिस टू गुड्स देखो दिस टू गुड्स दैट डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड जदी आंकर प्राइस बढ़ुछि तो आरो डिमांड ता भी सब्सिक्वेंटली बढ़िबो that's why these two goods have to be read differently because these two goods they do not follow law of demand ठीक है is it clear till now तो गोटे क्वेश्चन कर देबा तो यूपीएससी रे ए टॉपिक ऊपर गोटे क्वेश्चन पचारि थिला पड़े हाँ तो प्लीज टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन yes Rashmi given goods these are essential and no alternative yes these are very essential goods जेमति given goods में example जदि देबी तो rice for जदि ओडिसा रे हमें पढ़िबा तो rice will considered as a given goods जदि rice रो प्राइस बढ़ुची भात जदि भात रो जदि प्राइस बढ़ुची तो जेमति जान छ ओडिसा रे तो भात होउची स्टेपल फूड तो लोक माने ये भाबे कि आउ कंज्यूम करिवे आउ किनिबे कि आरो फ्यूचर रे प्राइस बढ़ो और बढ़ी जिवो जेमति राइस रो जदि प्राइस बढ़ी गला तो लोक माने होर्डिंग करबा स्टार्ट करबे आउ डिमांड करी कि
बढ़ी जमी अमेरिका रे केस होता अमेरिका रे कौन थिला जो सप्लाई जो जब इंडिया बासमती राइस सप्लाई बैन कर देथिला तो जो भी अमेरिका रे जो ओडिया माने रहउथिले कि इंडियन माने रहउथिले तांकू सेठी राइस टा बहुत बढ़ी गलानी प्राइस टा कहीं सप्लाई ये एक्सपोर्ट इंडिया बंद कर देथिला तो लोक मैंने कौन करें गोटे दिन में जिते भी सुपर मार्केट थिला सबू राइस को होल्ड करदे तो जब प्राइस बढ़िला लोक मैंने आउ ताकू डिमांड करिकी निज घरे होर्डिंग करिकी रखीदेले तो दिस आर ऑल डिफरेंट गुड्स दे आर वेरी एसेंशियल गुड्स बट दे हैव नो अल्टरनेटिव और जदि तार प्राइस बढ़ेबो लोक मानकू लागिबो कि आरो प्राइस आउ बढ़ी जिवो इन फ्यूचर तो से आउ कंज्यूम करिवे दे विल कंज्यूम मोर तो डिफरेंट गुड तमे राइस एंड ओडिशा कॉन्टेक्स्ट रे एटा मन रखिबो तो एटा क्वेश्चन कौन करबे कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड मार्केट डिमांड ऑफ ए गुड माइट इंक्रीज इफ इट्स प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज दिस इज यूपीएससी टॉप लेवल क्वेश्चन ठीक अछि एटा बहुत जार कांसेप्ट क्लियर अछि ए क्वेश्चन करि पारिबे इट इज वेरी मच मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉरी व्हाट यू से conceptual question ठीक अछि प्लीज टेक योर टाइम 1 minute or 2 minute and you solve this answer 1 and 4 रेशमी कहूँ 1 and 4 आउ किए विक्ट्री विक्ट्री काइंडली रिपीट गिफेन गुड्स गिफेन गुड्स जमती विक्ट्री कहली दिस आर दोज एसेंशियल गुड्स जदि तारो मार्केट रे प्राइस बढ़ी गला तो ऑटोमेटिक तारो डिमांड भी बढ़ी जमती मो राइस रो कांसेप्ट कहली भात रो कांसेप्ट कहली जो तो ओडिसा रे एप्लीकेबल और मु एग्जांपल देली जोटा देखि देबो जोटा इंडिया जब बैन करिथिला एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस टू अमेरिका लोक माने सेठी प्राइस बढ़ी गला राइस टू अमेरिका रे लोक माने आउ कंज्यूम करबा को स्टार्ट कर देले बिकॉज़ दीज आर स्टेपल फूड्स हमने किनी खाइबे ही खाइबे ठीक अछि आउ न बढ़ी जाउ तार प्राइस तो लोक माने सही दिन सुपरमार्केट जाके सब राइस टा किन दैथिले तार डिमांड टा बढ़ी जाइथिला फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड सपोर्टिंग सप्लाई बुझे दियंतु व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड सपोर्टिंग हाँ फैक्टर्स क्या किए निकायु फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड सपोर्टिंग सप्लाई सप्लाई ऑब्वियसली तो सप्लाई जो जोटा अछि अगर जदि सेटा मार्केट इकोनॉमी अछि तो प्राइवेट जो पॉलिसी जो से हमने फ्रेम करूछन ता ऊपर डिपेंड करिवो सप्लाई चेन कांस्टेंट जेमति इंडिया रे हम देखिबा बहुत आमे जो इंडिया कंट्री अछि सेटा डिपेंडेंट होछि फॉरेन कंट्रीज रो तो अगेन इट विल डिपेंड ऑन द टैक्स रिजाइम जोटा इंडिया फॉलो करछि कस्टम टैक्स इंडिया केते लगौछि इंपोर्ट ड्यूटी केते लगौछि फॉरेन कंट्रीज तो सप्लाई चेन से टू भी डिपेंड करे तापरे मटेरियल रॉ मटेरियल ऊपर भी हम देखिबा जदि हम पाखे जेमति सेमीकंडक्टर भी इंपोर्ट जदि हम रॉ मटेरियल जदि एठी मिली जाय था सेमीकंडक्टर पय तो एठी सप्लाई चेन हमरो स्ट्रांग होइता तो देयर आर वेरी मच फैक्टर्स रिगार्डिंग व्हाट अफेक्टिंग सप्लाई फर्स्ट वी कैन से दैट द इंपोर्ट a policy of any government of any economy it affects supply and the presence of natural resources it also the secondary and most important factor and obviously demand जदि तार डिमांड बेसी थिबो तो सप्लाई पे से हमने चेष्टा करिवे जदि तार प्रोडक्ट डिमांड नहीं तो लोक माने एते बदर करिवे नहीं ता सप्लाई पे यस प्रियंका सी विक्ट्री एवरीवेयर सी यस तो आंसर विल बी सी अच्छा देखिबा चलो कौन होची आंसर ता देखिबा तो other thing remaining unchanged market demand for good might increase ठीक अच्छे market demand for good might increase for a good ठीक अच्छे तो पचारि से गोटे गुड रो डिमांड केबे बढ़िबो से पचारि गुड रो केबे डिमांड बढ़िबो तो फर्स्ट ऑप्शन इज प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस तो जदि आरो सब्स्टिट्यूट रो जदि प्राइस बढ़िबो तो आरो डिमांड बढ़िबो यस सब्स्टिट्यूट कोन टी कॉफी रे एग्जांपल जदि ए गुड रो सब्स्टिट्यूट रो जदि प्राइस बढ़िला तो तारो डिमांड ता जो प्रोडक्ट रो जो क्वेश्चन जो प्रोडक्ट को गुड्स को होची तारो मार्केट रे डिमांड बढ़िबो प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस नहीं प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस हेले तारो डिमांड ता घटी जिवो जेमति टी एंड सुगर जदि सुगर रो प्राइस बढ़िला तो टी रो डिमांड ता घटी जिवो द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस तो तार डिमांड ता बढ़ी जदि तुम जदि कंज्यूमर जदि इनकम ता बढ़ी गला तो तार गुड ता जो डिमांड अछि तार गुड ता घटी जिवो ना लोक माने जदि इनकम बढ़ी गला तो से इंफीरियर गुड थोड़ी जिवे से लो क्वालिटी गुड चूज करिबेनी से ब्रांडेड क्लोज ब्रांडेड जिंसटा को जिवे तो थर्ड भी हेबोनी व्हेन इट प्राइस फॉल यस दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड कहूची कि जदि तार डिमांड ता जदि तार प्राइस घटुची किछि प्रोडक्ट रो तो प्राइस जो डिमांड होची से गुड्स ऑटोमेटिकली बढ़िबो तो आंसर विल बी
1 and 4. ठीक है, तो these are all about today's topic students. तो आई होप कि आई एम एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो चैप्टर्स थिला जो क्वेश्चन जमती यूपीएससी ओपीएससी पचारूची ए बोलिया यू हैव टू प्रैक्टिस एंड दो स्टूडेंट्स हु आर जॉइनिंग न्यू दे कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दे कैन फॉलो आवर चैनल. मोर ऑलरेडी प्लेलिस्ट अच्छी इकोनॉमिक्स मो इंपोर्टेंट चैप्टर्स को पार्ट बेसिस रे बहुत भलो किना बुझे छी. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स यू कैन रिफर दोस वीडियोस एंड वी हैव आल्सो आवर टेलीग्राम ग्रुप पे जॉइन करंतु कि आपन जो मोबाइल नंबर अच्छे सेठी भी कांटेक्ट करके निजर डाउट टाको क्लियर करि पारिबे. तो जदि वीडियोटा भलो लागला प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड यू कैन गेट वेरी मच गुड क्वालिटी lectures here. You can have lectures of Soumya sir, teaches history and geography. You can have polity lectures by Sabir sir. You can have CSET classes available here. The history by Nitish sir. So you can have every top quality classes in this channel. So those are really aspiring for OPSC and civil service or UPSC or any kind of civil service examination. They will get some insightful content from here. They will get some insightful knowledge from here. And this is our motive why we have started this online series of economic, history and geography. So in description box रे भी मु पठेई देबी से link टा, you can just refer and see. Inflation निकायु, inflation ऊपर already video अच्छी. You can check my playlist. Already video अच्छी. Inflation ऊपर video अच्छी. You can check my playlist. Okay everyone, thank you everyone. So next we'll meet with another chapter. तो schedule टा already YouTube channel रे send करा देछि. You can come and accordingly attend our classes. Thank you.